Welcome everybody to today's collaborative video. In this video, we're going to be discussing the concept of patriarchy. We're going to be looking at the context of patriarchy specifically in a Pakistani context, and we'll be looking at defining patriarchy and understanding how it affects men just as much as women. So let's dive in. Over to you, Dr. Madhiha. Hello everybody, welcome to another episode. आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेट्रियार्की के बारे में। पेट्रियार्की की क्या डेफिनेशन है, ये किस तरह हमारे माशरे पर असरअंदाज होती है और पेट्रियार्की का आगाज कहाँ से हुआ। पिदरशाही निज़ाम सिंफी इम्तियाज पर फ़रोग़ पाता है। इसका मकसद मर्दानियत या नुस्वानियत के मिसाली मेयारात पर अमल करना या उनको तक़वियत देना होता है। It's a social order thriving on gender normative binary, adhering to or reinforcing ideal standards of masculinity or femininity. पिदरशाही निज़ाम एक समाजी और नज़रियाती तामीर है जो मर्दों को औरतों से बरतर समझता है। ये मुआशरे में मर्दानगी और नुस्वानियत के दकियानूसी ख्यालात या तसव्वुरात को मुसल्लत करता है और ये ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ता है। Patriarchy is a social and ideological construct, considers men, which are patriarchs, superior to women. It imposes masculinity and femininity, character stereotypes in the society, which strengthens the inequalities between both genders. पिदरशाही निज़ाम दो तरह का होता है, एक डोमेस्टिक और दूसरा सोशल या सोसाइटल। डोमेस्टिक पिदरशाही निज़ाम में ये हो सकता है कि कभी-कभी ख़वातीन का मर्दों पर तसल्लुत ज़्यादा हो। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से एक मर्द डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि घरेलू ताल्लुकात में हमेशा मर्द की ही इजारादारी हो, लेकिन सोसाइटल पेट्रियार्की हमेशा यूनिवर्सल होती है, यानी कि आपको नजर आएगा कि तमाम ताकत की जगहों पर या पावरफुल पोजीशंस पर मर्दों की इजारादारी है, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हों, चाहे वो बिजनेसेस हों और उनके CEOs हों, चाहे वो मजहब के इदारे हों, यानी कि चर्च और मसाजिद, वहाँ पे आपको मर्द ही हुक्मरान नजर आएंगे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर या इंसाफ के इदारे हों। पिदरशाही निज़ाम की वजह से ख़वातीन को नापसंदीदा समझा जाता है और उनको हकारत की नज़र से देखा जाता है। सोसाइटी mistreats women and considers them inferior and police women, transgender and gender non-binary. Over to you, Nuriyah. Patriarchy is a social order thriving on gender normative binary, adhering to or reinforcing ideal standards of masculinity and femininity. As per the famous intellectual and historian Yuval Noah Harari, there has been 3 major revolutions in human history. The cognitive revolution 70,000 years ago, followed by the agricultural revolution 12,000 years ago, and then the scientific revolution in the 15th century. Before the agricultural revolution 12,000 years ago, humans lived a nomadic lifestyle, as hunter-gatherer societies traditionally. These societies were predominantly egalitarian with political, economic, and gender equality. After the agricultural revolution, humans started settling down in permanent communities. However, it's important to note that for most of our existence, human beings have not lived under patriarchal rule. The patriarchal order as we know it today is only about 5,000 years old. In fact, Homo sapiens, modern human beings like ourselves, were making sophisticated tools, clothes, windproof shelters, and watercraft within matrilineal or matriarchal communities about 90,000 to 80,000 years ago. It's unclear even today whether these societies were matrilineal or matriarchal, but what we do know is that patriarchy emerged later. In Mesopotamia, patriarchy became embedded with the transition from subsistence living to agriculture, agrarian societies, the formation of cities, and the rise of militarism. And this seems to be a pattern. Societies became patriarchal either as they transitioned to agriculture or through colonization. It was only after the agricultural revolution that almost all major world religions as we understand them today came to be. With the advent of religion came a codified sort of patriarchy, the effects of which women are still feeling today. It's interesting to note that even in Judaism, the society is matrilineal.
Unlike in Islam, where the child takes the father's name and religion, in Judaism, it's the other way around. So the child is Jewish because their mother is Jewish. And it's important here to note as well the difference between matrilineal and matriarchal societies. Matriarchal societies are just as they sound. They are like patriarchal societies, with the only difference being that it refers to a society where women are in control. While the anthropological term matrilineal simply denotes the lineage and the line by which the child is to carry their name and from which their lineage is derived. मशहूर दानिश्वर और राइटर युval नोआ हरारी के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 3 बड़े रेवोल्यूशंस आए हैं। सबसे पहला कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो कि आज से तकरीबन 70,000 साल पहले आया। उसके बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो कि तकरीबन 12,000 साल पहले आया। उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो कि 15वीं सदी में आया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले तकरीबन 70,000 से तकरीबन 12,000 साल पहले तक की सोसाइटीज को हंटर गैदरर सोसाइटीज बोला जाता है, यानी कि लोग छोटे छोटे कबीलों की शक्ल में या बैंड्स की शक्ल में रहते थे और शिकार करके अपना गुजर बसर करते थे। ये कबीले एक नोमैडिक या खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे, जिसमें ना सोसाइटी पेट्रियार्कल थी ना मेट्रियार्कल, बल्कि कबीले का एक सरदार होता था जो सबकी फलाह बहबूद और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता था। अगर कबीले में कोई बच्चा होता था तो उसको कबीले के तमाम लोग मिलकर पालते थे। आज की सोसाइटीज के बरअक्स, जिसमें बच्चों की परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी खवातीन पर होती है। उसके बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तकरीबन आज से 12,000 साल पहले। ये वो वक्त था जब लोगों ने समुद्रों, दरियाओं और नहरों के किनारे ज़रख़ेज़ ज़मीन को देखकर आबादी की और एक खाना बदोश या नोमैडिक लाइफ को छोड़कर छोटे छोटे बस्तियां बसानी शुरू की। यही वो वक्त था जहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी ज़ाती मलकियत का तस्वर उभरा। मर्दों की ज़मीन उनकी ज़ाती मलकियत बनी। इसी तरह ख़वातीन और बच्चे भी मर्दों की ज़ाती मलकियत बन गए। यही वो वक्त था जब मर्दों ने आपस में जंगें शुरू की और इन जंगों के नतीजे में वो ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी उठा लेते थे और यहीं से पेट्रियार्की का आगाज हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट की वजह से न सिर्फ पेट्रियार्की आई बल्कि एक माशी इस्तेसाल का निज़ाम भी कायम हुआ। यही वो वक्त था जब ताकतवर और कमज़ोर, नौकर और मालिक, अमीर और गरीब का तस्वर वजूद में आया। सबसे पहली सोसाइटीज़ जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी वो मेसोपोटामिया की थी और यही वो वक्त था जब तमाम मज़ाहिब भी वजूद में आए। जैसा कि नूरिया आपको बता चुकी हैं कि मज़ाहिब भी पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है। दुनिया के तकरीबन हर मज़हब में आपको मर्द की इजारादारी नजर आएगी और तकरीबन दुनिया के हर मज़हब में औरत को एक सेकेंड क्लास सिटीजन की हैसियत हासिल है। Patriarchy is a social and ideological construct that considers men, who are the patriarchs, as superior to women. It imposes masculine and feminine stereotypes in society, which strengthen the unequal power relations between men and women. Patriarchy can manifest itself in very different ways, such as the dislike, contempt, or ingrained prejudice against women. Violence against women and girls is very commonplace in patriarchy. In Pakistan, due to this gender hierarchy, society as a whole mistrusts, mistreats, and polices the behavior of anybody but straight Sunni men. This prejudice is transferred from the oppressor to the oppressed in every patriarchal society, but we see this play out in Pakistan from a top-down level, whether it's happening in the top levels of government or behind closed doors in the house of an elite family or a family from the village who are barely making ends meet. Patriarchy has no class and has no bounds. Its reach is very far-reaching and the tentacles go across Pakistani society as a whole. In a patriarchal society, women are often labeled, as we see in Pakistan, as drama queens, being too outlandish, too outspoken, too ziddi, too demanding, too rawniki, too badtameez, and other words to that effect that I'm sure Dr. Madhiha is going to tell us in more detail. Also, the idea of women being each other's worst enemies is also reinforced due to the societal rewards for such behavior.
We see this play out within extended families where mother-in-laws turn against daughter-in-laws, and daughter-in-laws often compete with one another to get a higher position within the status of that household. In order to navigate the complex patriarchal structure that's been created, women often have to adopt certain strategies, which are termed bargaining with patriarchy. These strategies, sadly, often include conforming to beauty standards set by men and adopting submissive gender roles, including giving up rights in their property, according to Islamic law as well, putting down other women to gain male approval, and seeking validation from men. This also plays out, very unfortunately, not only in Pakistan, but across Africa, where women are turning to very dangerous methods of skin bleaching and creams like Fair and Lovely to dampen the effects of the way patriarchy tells them that they need to be presentable for public consumption. Mary Estelle के मुताबिक, if all men are born free, how is it that all women are born slaves? सबसे पहले हम उन रवैयों का जिक्र करेंगे जो पिदरशाही मुआशरे में ख़वातीन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। फेमिनिस्ट वो होती हैं जो ख़वातीन की बराबरी की बात करती हैं, और फेमिनिन थ्योरी में मेल गेज या मर्द की नज़र का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। औरत को मर्द की नुक्ते नज़र से देखना और सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट या जिनसी तस्कीन की चीज़ समझना पेट्रियार्कल सोसाइटी में ख़वातीन का रोल सिर्फ इस हद तक महदूद रह जाता है। हम देखेंगे कि ख़वातीन मर्दों को खुश करने के लिए तरह तरह की चीज़ें उस सोसाइटी में करती हैं। मार्गरेट एटवुड, जो कि एक मशहूर राइटर हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, I am a woman with a man inside me, looking at me, I am my own voyeur. इसका मतलब ये है कि मैं एक खातून हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर एक मर्द बैठा है जो मुझे मर्द की ही नज़र से देखता है। सोसाइटी में मुख्तलिफ तरीकों से हम देखेंगे कि पेट्रियार्की सरायत कर गई है, जैसा कि फेयरनेस क्रीम्स। ख़वातीन के गोरे रंग को मर्द पसंद करते हैं और ख़वातीन तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करती हैं अपने आप को गोरा करने के लिए, ताकि वो मर्दों की मंजूर नज़र बन जाएं। इसके अलावा एजिज्म का कॉन्सेप्ट, ख़वातीन खुद ही बड़ी उम्र की ख़वातीन से नफरत करती हैं, क्योंकि मर्दों के नज़दीक जब ख़वातीन एक ख़ास उम्र तक पहुंच जाएं तो वो इतनी अट्रैक्टिव या इतनी पसंदीदा नहीं रह जाती। इसीलिए जब कोई फिल्म एक्ट्रेस 30 या 35 की हद क्रॉस करती है तो उसको फिल्मों में आंटी कहकर बुलाया जाता है। इसी तरह आम तौर पर ख़वातीन इसी एजिज्म का शिकार नजर आती हैं। इसके अलावा सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन इन द मूवीज, इन द सॉन्ग्स, आप देखेंगे कि बॉलीवुड के मुख्तलिफ गानों में या हॉलीवुड की मूवीज में ख़वातीन को एक प्रॉप या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो स्क्रीन पे सिर्फ रंग बिखेरती नजर आएं। उनके डायलॉग्स बहुत कम होते हैं और उनके रोल बहुत महदूद होते हैं। अगर ख़वातीन के कुछ रोल्स होते भी हैं तो गानों, डांसेस या बहुत मुख्तसर लिबास तक महदूद रह जाते हैं। इसके अलावा ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जिसमें ख़वातीन आमतौर पे बिकिनीज पहनकर नजर आती हैं ताकि वो मर्द के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को और दूसरों को जज करें। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन टू होम्स, ख़वातीन को घरों में नज़र बंद करना और उन पर मुकम्मल इजारादारी या तसल्लुत कायम रखना, ख़वातीन के आने जाने पर पाबंदी, ये भी एक पेट्रियार्कल माशरे का ही नतीजा नजर आता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि दुनिया की हर जुबान में जब मर्दों ने एक दूसरे को गाली देनी हो तो वो माँ बहन के जरिए ही दूसरे मर्दों को गाली देते हैं। दुनिया की हर जुबान में कर्स वर्ड्स में मर्द ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। That's right, Dr. Madhiha, and that's exactly why it's imperative that we uncondition ourselves and break the cycle of these harmful behaviors and practices. These are all expectations that are imposed by patriarchy. Now, let's talk about how patriarchy manifests itself in various other ways in a country like Pakistan. Another way we see patriarchy affect Pakistani society is in the instance of gender preference. Pakistani society, by and large, has a gender preference for male children. The birth of a male child is traditionally celebrated with great enthusiasm. Mithaiyan, everybody's happy, there's congratulations being spread far and wide. However, that same enthusiasm, especially in rural areas, is not given to the announcement of the birth of a baby girl. Families often consider the arrival of a baby boy or a son in the family as
a time for celebration because it safeguards their future. A baby boy will offer future economic support, and this is also one of the most untalked about ways that patriarchy affects men within Pakistani society or South Asian society in the wider context. This places an unfair economic burden on them to provide for their aging parents long into their own careers and once they've got a family of their own. This often leads to men feeling overly worked, stressed. It can lead to family relationship breakdowns as well as have a severe impact on their mental health. The portrayal of gender roles in our society and dramas also contributes to the burden placed on men. Our dramas often show women in gender-typical roles as submissive, while the male characters and the protagonists are often depicted as the ones who will travel abroad for a higher education. In fact, they're encouraged to do so. Once again, it's celebrated by their family and relatives. However, you will often see the woman protagonist in a role that predominantly caters to the needs to arrange her upcoming nuptials, so her rishta, her shadi, or you will see her in a very submissive role catering to her family's needs, including her fathers and brothers. Once again, men are seen to be the breadwinners who will take care and take over family businesses, while women are seen to have their place well and truly in the home. ये इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन के बारे में, पेट्रियार्कल माशरे में तअस्सुब या प्रेजुडिस ऑप्रेसर से यानी कि जालिम से ऑप्रेस्ड या मजलूम की तरफ मुंतकिल होता है। जो औरत एक पेट्रियार्कल या जालिम माशरे में होश संभालती है वो उसी को नॉर्मल समझती है। बरस हाँ बरस से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक यही तअस्सुब और महकूमियत मुंतकिल होती है। मशहूर फेमिनिस्ट सिमोन डे बोर के मुताबिक women have been actively playing the role of passivity, यानी कि ख़वातीन खुद अपने आप को महकूम साबित करने पर तुली रहती हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन इसके पीछे भी पेट्रियार्की है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे। पिदरशाही निज़ाम में औरत मर्द की मोहताज होती है। जब औरत को तालीम की सहूलत नहीं दी जाएगी तो वो फाइनेंशियली मर्द की मोहताज या ओप्रेस्ड हो जाएगी और मर्द के रहमो करम पर होगी। इसके बाद अगर ख़वातीन किसी तरह से तालीम हासिल कर भी लें तो जॉब मार्केट पर मर्दों की हुक्मरानी है। तमाम डिसीजन मेकिंग या पावरफुल पोजीशंस पर, तमाम बिजनेसेस और कंपनीज के सीईओ की पोजीशन पर मर्द ही बैठे होंगे और इस तरह ख़वातीन के लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके कम हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे तैसे करके जब ख़वातीन जॉब करने की पोजीशन पर आती हैं तो उसी वक्त उनकी शादी कर दी जाती है और वो घर बैठ जाती हैं बच्चे पैदा करने और घर संभालने की जिम्मेदारी लेकर। ऐसे मौके पर ख़वातीन के लिए तालीम और रोजगार के मौके मजीद कम रह जाते हैं और जब मर्द सोशल लैडर को जब मर्द ऊपर से ऊपर तरक्की कर रहे होते हैं अपनी जॉब पर, उसी वक्त ख़वातीन अपने कीमती सालों को घर बैठकर गंवा रही होती हैं। इस तरह ख़वातीन इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाती हैं और मुस्तकिल तौर पर माली तौर पर मर्दों की मोहताज होती हैं और मर्दों के रहमो करम पर होती हैं। यही इनसिक्योरिटी ख़वातीन को दूसरी ख़वातीन से मुकाबला करने पर मजबूर करती है और ऐसे में ख़वातीन दूसरी ख़वातीन की टांग खींचती नजर आती हैं, जिसमें मुआशरा आराम से ख़वातीन पर इल्ज़ाम धर देता है और कहता है कि देखा औरत ही औरत की दुश्मन निकली। लेकिन हाल इस सब के पीछे मर्द का हाथ आपको नजर आता है या पेट्रियार्कल सोसाइटी का। 1988 में डेनिसन कैंडियोटी ने बार्गेनिंग विद पेट्रियार्की की टर्म मुतारिफ करवाई। ख़वातीन पेट्रियार्कल मुआशरे में अपने आप को महकूम या मजलूम साबित करने पर तुली रहती हैं। उसकी वजह यही है कि सोसाइटी ऐसे बिहेवियर का रिवॉर्ड देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में माएँ ही बेटियों को महकूम रहने का सबक देती हैं या सबमिसिव रहने का सबक देती हैं। जब बेटियों की शादियां की जाती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि वो हर हालत में अपने हस्बैंड को खुश रखें या अपने ससुराल वालों को खुश रखें। इसी तरह जब बेटा घर पे आए तो माँ बेटी को कहती है कि भाई के कपड़े इस्त्री करो या भाई के लिए खाना गर्म करो या पानी लाओ। इस तरह ख़वातीन को मुसलसल ये सबक दिया जाता है कि वो मर्दों की महकूम है। जैसा कि नूरिया आपको बता चुकी कि जब बेटा पैदा हो तो ख़वातीन ही सेलिब्रेट करती नजर आती हैं कि उनके यहाँ बेटा हुआ है। इसकी वजह पेट्रियार्की है। ख़वातीन
जानबूझकर जायदाद में अपना हिस्सा छोड़ देती हैं क्योंकि सोसाइटी में ऐसी खवातीन को अच्छा समझा जाता है या ऐसे बिहेवियर का रिवॉर्ड दिया जाता है। इसके अलावा खवातीन अपने ऊपर बढ़ चढ़कर मजहबी लिबादा ओढ़ती हैं क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी खवातीन को एक अच्छी औरत और बुरी औरत में डिवाइड करती है और जो औरत पारसा नजर आए, सर पे दुपट्टा ले, अपने आप को कवर करे, तो उसको अच्छी औरत कंसिडर किया जाता है और सोसाइटी उस बिहेवियर का खवातीन को रिवॉर्ड देती है। इसीलिए आपको नजर आएगा कि तमाम पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये रवैया आपको मुआशरे में साफ नजर आते हैं। इसके अलावा जैसे नूरिया आपको बता चुकी है कि तमाम मज़ाहिब भी पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस हैं और वो कोडिफाई करते हैं पेट्रियार्की को और खवातीन को जायदादों में कम हिस्सा दिया जाता है, उनको कम अकल तस्वुर किया जाता है और ये कहा जाता है कि जहन्नुम में आखिर खवातीन ही ज्यादा हों। So, coming back to one of the most crucial issues in Pakistan, gender preference. Gender preference for sons can lead to discrimination against girls in Pakistan from the moment that they're born, the moment of their birth. It's simple to see from a simple Google search how many young Pakistani children, I'm talking about girls and boys, are currently out of school. According to a recent UN report, it's going to take us 30 years, if we were to start from today, 30 years to get all the young girls who should be in school back into school, and 15 years to get all the young boys that should be in school back into school in Pakistan. So you can already tell that the impact it has on girls from the moment they're born. But not only that, girls may, as a result of this gender preference, receive less attention, fewer resources, and limited opportunities compared to their male counterparts, even despite being raised in the same household or family and having the same parents. The treatment between a brother and a sister is like oil and water. This discrimination can and will undoubtedly affect their access to education, healthcare, nutrition, resources, opportunities, financial independence, and their overall well-being and mental health, as well as their own reproductive capabilities and control over their own bodies. Hence the need for Mera Jism, Mera Marzi on a placard in the Aurat March becomes even more the need of the hour. Women in patriarchal societies like Pakistan also face immense pressure to give birth to or produce male children. In extreme cases, wives who fail to produce a male child for their husband or their in-laws can, in extreme cases, be victims of homicide. In lesser extremes, they may be victims of marital shunning, societal ostracization, abandonment, domestic abuse, or divorce. This is because the preference to have a baby boy in Pakistan is seen to have an effect on the status of a woman within her household. It's commonly thought that a woman bearing at least one son to a husband in Pakistan say that she has a higher say in that household's decision-making capabilities. And so, as you can imagine, the more, the merrier. The more sons you have, the more say you have in that household. There are also instances of forced pregnancy termination, where women may be coerced or forced to terminate pregnancies if the fetus is determined to be a female. In rural areas where people may be more susceptible to superstition and things like black magic and going to peers and other people as opposed to doctors, this could be even more dangerous for women. Abortion is illegal in Pakistan except in two situations. If it's needed to preserve the life of the mother or her health. But even still, this practice is very much commonplace and it's known as sex-selective abortion. This happens across Pakistan, especially rural Pakistan, and it is also a tool of the patriarchy to undermine a woman's reproductive autonomy and her rights. जैसे कि नूरिया आपको बता चुकी हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए तालीम के कम मौके होते हैं, कम वसाइल होते हैं और उन पर कम तवज्जो दी जाती है। हत्ता कि ख़वातीन को अपने जिस्म पर इख्तियार नहीं। घर से बाहर निकलने से लेकर तालीम हासिल करने तक और शादी करने तक, जॉब हासिल करने तक ख़वातीन मर्दों की इजाज़त की मोहताज होती हैं।
इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी ख़वातीन की मूवमेंट्स को सपोर्ट किया जाए। दोस्तों, अरिस्टोटल ने कहा था कि women are mutilated males, यानी कि ख़वातीन मर्दों की डिफेक्टिव या बिगड़ी हुई शक्ल हैं। अरिस्टोटल से लेकर तमाम हैवी वेट वेस्टर्न फिलोसफर्स तक कोई भी मिसोजिनी से बच नहीं पाया, चाहे वो हेगल हो, चाहे वो थॉमस एक्वाइनस हो, नीचे हो, सिगमंड फ्रूड हो। तमाम के तमाम फिलोसफर्स ने बहुत ही मिसोजिनिस्टिक बातें की हैं। इन सब को छोड़िए, हत्ता के आजकल के दौर में भी मर्द मजहब को तो छोड़ देते हैं लेकिन मिसोजिनी को नहीं छोड़ते, और जब भी एक दूसरे को गालियां देनी हो तो ख़वातीन का नाम लेकर और एक दूसरे के घर में मौजूद माओ और बहनों को लेकर एक दूसरे को जलील या उनकी इंसल्ट की जाती है। अगर आप भी पेट्रियार्की का शिकार हैं, या आप मिसोजिनी का शिकार हैं, या आपके अंदर इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है, तो आप अपने रवैयों पर गौर करें और औरत पर हुक्म चलाना या उसको अपनी मिल्कियत समझना छोड़ दें। In conclusion, we've seen that patriarchy can rear its head in many ugly forms, including to affect and restrict men and have them not be able to express their emotions and have to conform to certain very specific gender norms. Small-scale actions can have a big impact. Women can empower themselves by seeking an education, pursuing their passions, and supporting other women in their endeavors by questioning patriarchal norms and encouraging open conversations. We can contribute to the call for change and push towards gender equality within Pakistan. If we stop being each other's enemies and we work together, what we can achieve is out of this world. So stop making excuses for toxic masculinity. Stop with the baji darge, the harassment and rape jokes, and stop cussing out someone's mother, sister, or daughter just to win a cheap point. Next time you want to swear using a woman's body to feel better about yourself, replace it with yourself, your father, or your brother, and maybe you won't feel the same way. It's all about control and power, and it's time for us to relinquish that control and take it back. The next time that you think you need control over a woman's body to feel smug about yourself, think again. Say no to discrimination and violence against women and girls, especially with what's happening in Pakistan. Speak up, raise your voice and your banners at the Aurat March, counter injustice, speak to your male allies, friends, relatives, and together we can challenge the patriarchal norm, work towards a more equitable and inclusive Pakistani future for everybody who lives there. I know this is not an overnight process, and Dr. Madhiha has also made it very clear to you that this is so deeply embedded in our society that none of us expect it to change overnight. What we're saying is that if now the UN is telling us it's going to take 30 years to undo all the damage that we've done, our message to you in this video is please let's not waste a day more. अगर आपको हमारी बातें पसंद आए तो फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय। Bye everyone. Thank you for watching.